So good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. We are back with our Wednesday meet, and the agenda for today is the 6th wing of Ashtang Yog. So we are doing the Yog Sutra of Sage Patanjali, and we are doing the Ashtang Yog. We have already done the 5 limbs. So the outward journey is completed. Now we are moving into the inside world, our internal world. So that is where we have started our session. In the last session, we saw pratyahar, turning inside, turning inwards of the mind. Yeah, so we're controlling the senses, turning the mind inwards, and doing swadhyaya. So first, before we start with the session for today, where we are looking at dharana, that is the session for today, right? So let us first understand where we are. That means journey till now. If we have achieved some kind of, I won't say expertise, but some kind of practice in the first 5 limbs, then we already know the importance of yam. So we are talking of satya and ahimsa. We are aware of it. We are aware that asteya and aparigraha is important in our spiritual journey. We are also aware of swadhyaya and ishwar pranidhana as the foundation for our spiritual growth. And we know we have to hold our body in a posture for about 1 hour or so. So we need to have a fit, flexible body where the asana helps, posture. And then we have done the pranayama. So we are purifying our mind and making our body strong with the asana and pranayama, correct? And in the last session, what we have done is we have turned our mind inwards, controlling our sense organs. Then we are getting into the inside world. So अगर एक जनरली हम बात करें, how is the nature of the mind or a normal human being? Very distracted and very turbulent, है ना? तो impure desires होती हैं and mind focus नहीं होता है, so there is a lot of turbulence. So we can compare a mind of an ordinary person. Ordinary person means who is not a seeker as yet, which is actually accounting for more than 99% of the population. So mind कैसा होता है? It can be compared to a lake where the water is dirty and the water is turbulent. So you can visualize that. So that is the nature of the mind. And by reaching pratyahar, by controlling the senses, turning the mind inwards, what we are achieving? We are making the water silent and pure. Now the lake is such that the water is still and the water is pure. That is the nature of the mind when you are reaching the level of pratyahar. Correct? So this is where we are. Now we are moving into, you can say, making a booster dose, taking a booster dose in the spiritual journey by moving into dharana. So this is a different level. प्रत्याहार के बाद जब हम धारणा की बात कर रहे हैं तो वो एक अलग लेवल है. So now let us look at what, having understood where we are, let us look at what we mean by dharana. तो क्या understanding है? What do we understand by dharana? Whatever is your understanding, it is perfect for you right now. And by the end of the session, you will have a much clearer picture of what actually dharana is. Yes? Yeah. So anybody who wants to share? What is dharana? Simple translation. Yes, Nivedita, you go ahead. सर मेरे हिसाब से धारणा बोलेंगे तो टू फोकस ऑन समथिंग. परफेक्ट, वेरी गुड. सो फोकस वेदर वो बोलते हैं ना सर के एनर्जी फ्लोज. वेरी गुड. हाँ वही है. तो टोटल where attention goes, energy flows and results follow, है ना? So that is the basics of secret, what we are talking of, law of attraction. Very good. So that is exactly what is meant by dharana. One understanding of dharana is very, very clear. Focus. What is your concentration? What are you concentrated? What are you concentrating on? जैसे एक बच्चा पढ़ाई में फोकस कर रहा है, किताबों पे फोकस कर रहा है. What are you focusing on? Somebody is focusing on becoming the champion in cricket.
somebody is focusing on becoming a great scientist, somebody is just flowing and enjoying the life as a maybe a life coach, as a healer, somebody wants to be a great businessman, a teacher. हाँ, तो हमारा फोकस क्या है लाइफ में, हमारा फोकस क्या है, right? So that is your dharana. So you can say intention. Intention will be the starting point of what we can understand what dharana is, correct? Okay, anybody else who has a different understanding, please go ahead and let me welcome people who have just joined in. So Seerath ma'am, namaskar. DG, okay, welcome. And Bharati Gupta ji, welcome. Yes, so anybody who wants to share, please, you can unmute yourself, and if comfortable, switch on the video, and then you can share something about yourself if you're coming here for the first time. So welcome all of you. Yes, coming back to the discussion. So your understanding of dharana, anybody who wants to share? So dharana can be your belief. Dharana can be your belief, yes. Yes, another meaning of dharana is also the beliefs and the concepts that we carry, which run our life. So that will dictate what kind of focus we have in life. Yes. So focus background में आपके beliefs and concepts what you have, that also becomes part of the dharana. So it is a little holistic. It's not a very simple kind of an understanding of an intention, but we will start understanding it in the form of what are we focused on, what are we concentrating on, what is the belief behind that focus. Yes, all that is dharana. Anybody else who wants to share his view? Right, so that's a good enough understanding. Now we can move on. So dharana. So let us look at what is the normal focus of a human being in life. What are the important areas of our life? And without any discussion or arguments, we can safely say there are three major areas of life where a human being focuses, right? One is health, one is wealth, and one is relationship, right? Yeah. And depending on what stage we are, तो जैसे हमारे 4 stages हैं life के, brahmacharya, grihasth, vanprasth, and sannyas. So if you are in the first 2 stages, that means brahmacharya में हो या फिर grihasth में हो, you will have a lot of desires. You means we means all human beings in the stage of brahmacharya or grihasth will have a lot of desires, and nothing wrong with desires. आपको desires fulfill करनी है, तो brahmacharya में आप क्या करेंगे? You will desire knowledge, you will desire skills, so that you can, when you move to the grihasth stage, you are accomplished enough to earn a livelihood for yourself and your family. तो 2 पुरुषार्थ जो हम बोलते हैं, काम और अर्थ, कामा अर्था, ये दोनों जरूरी हैं. तो अर्था is wealth. So desiring wealth is not wrong. It is there as one of the major, you can say, purusharth. They are the major pillars, right? So anybody who says do not desire wealth, think again, right? You need wealth, otherwise how will you earn your livelihood? Gone are the days when a Buddha can go around saying Bhikshaam Dehi. Nobody is going to give you that. We know how we treat our beggars, right? So that doesn't work in the modern age. In the Kali Yuga में नहीं चलेगा. So you have to be very, very clear. Earning livelihood, I should have the knowledge, I should have the skills, I should have the expertise or the know-how how to earn my livelihood for myself as well as my family, because I am the provider. Yeah, I'm the provider, so I need to provide the necessary you can say साधन जो हैं लाइफ में चाहिए, उनको जुटाना है. आज की डेट में क्या है? वो रोटी कपड़ा मकान के लिए एक अच्छा घर होना चाहिए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, अच्छे एक गाड़ी होनी चाहिए. ये सब नेसेसिटीज हो गई हैं लाइफ की, है ना. दिस आर नो लॉन्गर लग्जरीज. तो ये सब पूरे करने हैं तो डिजायर्स तो होंगे, और डिजायर्स को पूरे करने हैं. So that is actually the meaning of dharana, is having the focus on what are you desiring in your life. Now, when we say desire, what is the catch here is normal human beings, when they have a desire, they have a lot of expectations and they have a lot of attachments. So if we take the desire, थोड़ी सी उसमें स्वाध्याय करें और उसमें से अटैचमेंट हटा दें,
तो pure form of desire will be called the intention. How many of you can connect with it? Desire में से आप expectation हटा दीजिए और उसमें से attachment हटा दीजिए, right? Then what is left in the desire is the intention, and then we can work on fulfilling that intention in our life. Correct? And we have various methods how we do that. So law of attraction is one. Everybody is aware of that. Law of attraction, सबने सुना, आकर्षण का सिद्धांत. So we attract who we are, we attract what we actually are, and what we get is based on our deserving level. So we may not get what we desire, we get what we deserve, and there is no mistake in the universe. So universe knows exactly what we deserve in life, and that is what is given to us as per our karma, as per our karmic accounts, as per our efforts. तो जो हम कर्म करके आए हैं और जो हमारा डिजर्विंग लेवल है उसके हिसाब से हमको लाइफ में ये फिजिकल बॉडी मिलती है. Then we have the health accordingly, then we have the wealth and the people in our life, in relationships. All that is karmic, and that is exactly what we deserve right now. Any questions on that? Yes. But having said that, are we stuck in that life? No. We always have a choice to improve, and we always have a choice to manifest what we want. And this is what is taught in the law of attraction also. Correct? So now let us look at how do we go about fulfilling the purpose of dharana. तो कैसे करेंगे? So let us look into our desires. Theoretical नहीं जाएंगे. What is the most important desire in your life right now? Right now. आगे की बात नहीं करा, पीछे की बात नहीं करा. काश ये हो जाता ना, काश ये कर लेता नहीं, कोई काश वाश नहीं चलेगा. अभी as on date, whatever has happened has happened. Your life is happening right now. What is the most important desire for you right now? And be authentic. I don't want to hear I am free from all the desires. मेरे को कोई desire नहीं है. So be more authentic. Yes, Amanji, go ahead. So, for example, right now, very right now, the only desire is to get the best out of this session from this discussion. Okay. No, isn't it? I mean, Yeah. if it's a right now, I mean, Yeah. what else? I mean, after this Right session, now there means could be when some. life is happening to you. यहाँ तो अभी हम साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, है ना? लाइफ में आपका पर्पस क्या है? Who are the most important people in your life? What are you focused on in life? तो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप में ही फोकस करके देखिए कौन सा एरिया आपका इंपॉर्टेंट है. That is what I meant. Okay, that's what you meant. Look into your life and see. Maybe an important event is what is beckoning you. So for me, if you ask me, the important event that is beckoning me is the event on 17th May. Yes, the spiritual retreat that we are having in Delhi on 17th May, and I am very excited about it. And all my intention is to, like have a great gala kind of an event where people are getting a lot of value and we are all thrilled about it, and it's a wonderful, successful event. That is what my intention is. But उसमें expectation आ भी जाएगी पर attachment नहीं है. आगे efforts करना मेरा काम है, results divine के हाथ में. So I'm not even attached to the result, but I will give my best shot, and then whatever happens, I take it as a prasad. भगवान का प्रसाद है, I will accept that. So that is where I am. अभी मेरा एक अगर event पूछोगे right now, what is going through my mind? The most important desire for me is right now that. Correct? तो उसमें contribution भी है, उसमें creation भी है, और उसमें total passion and excitement भी है. So like that, what is important for you in your life right now? Look at that. And there could be many other things. For me, some other things are like, okay, थोड़ा सा long term होगा, but then yes, my son's education. So I have to be a provider for that. No, उसको 4th semester के बाद वो आएगा भी, और 5th semester की fees जानी है. So there are some things that I need to plan, which is okay. Right? So like that, what is important for you right now? What are you focusing on? That is dharana. I'm just trying to explain by practical example what is dharana. So anybody who wants to share what is opening up for you in your life?
Yes, Sandeep ji, go ahead. सर वो जो आपने बताया ना उन 3-4 सेक्शंस में से ही थोड़ा थोड़ा सब सेक्शन में रहता है। Hmm. जैसे कि अब हम रिटायर्ड हैं तो भी घर तो हमें चलाना है, Hmm. तो फिर उसके लिए जो भी मंथली खर्चा होता है उसकी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है, Yes. उसका करना है। तो Yes. ये आ गया हमारा वेल्थ वाला पार्ट। Correct. फिर हमारा हेल्थ का है, तो एज के हिसाब से हमें अपनी वेलनेस के लिए, हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, उसके लिए Yes. भी ये भी प्रायोरिटी रहती है। Yes. फिर हमारे रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, कितना भी कर लें कुछ उसमें चैलेंजेस आते रहते हैं, Yes. तो वो भी रहता है। उसके साथ फिर चौथा पिलर जो मेरे हिसाब से है वो हम उस पर भी काम कर रहे हैं, जैसे सोशल और स्पिरिचुअल Very good. लर्निंग हम कर Yes. रहे हैं। जो वैसे मैंने पहले ही बताया था, मेरी इस सेक्शन में स्पिरिचुअल वाले में थोड़ा कम था, जिस पे मैं अब काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। ये सारे चीजों में ही थोड़ा थोड़ा हर एक के हिसाब से। अच्छा, जो यंग लोग हैं उनका ये जो है फाइनेंस वाले पे ज्यादा रहता है, जॉब वाले में उनका ज्यादा टाइम जाता है, Yes. और चीजों में थोड़ा कम जाता है। इस तरह से चलता रहता है एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। Absolutely right. Absolutely right. So people in the age group of 25 to 30, they are looking to, maybe add qualification, get more skills, get more expertise so that they can have a get a better package and then live and enjoy a great life, luxurious life. And then those who are in the grahas, they want to have more resources available for themselves and their family. So all fine, absolutely great. So that is the state we are in, and that is where Dharana works. So Dharana is mostly for the first two levels of life, I would say. So up to retirement, maybe around 60 years. So 30 years and 60 years, Brahmacharya and Grahast. ठीक है, तो उनके डिजायर्स हैं, बिल्कुल हैं, जरूरत है पैसे की है, इच्छाएं हैं, वर्ल्ड टूर करो, एंजॉय करो, वीकेंड्स पे जाओ, गोवा जाओ, जहां मर्जी जाओ, सिंगापुर जाओ, यूरोप घूमने जाओ, जहां जाना जाओ. These are your desires, fulfill it. Nothing wrong in it. Yes. So anybody else who wants to share? And how do you manifest it? With alignment with the universal laws. That is most important. So law of attraction को ध्यान में रखना है. And I'm not getting into the details of law of attraction because all of us know that. Yes. Anybody else who wants to share? Aman ji, Bharti Gupta ji, Sirat ma'am, Tarun, and of course Vijay ji, Apurva ji. Anything you want to share? Yes, Apurva ji, go ahead. जैसे संदीप जी ने बताया, रिक्वायरमेंट्स तो अलग अलग होती है, तो वो हिसाब से धारणाएं भी अलग अलग हो सकती है। एक नहीं 4-5 धारणाएं हो सकती है, डिजायर्स ऐसे 4-5 हो सकती है, बिल्कुल, जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हो। यस, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-6 डिजायर्स हो सकती हैं, पैरेलली यू कैन टेक एक्शन। हेल्थ में भी हो सकता है, वेल्थ में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, एंड रिलेशनशिप में 3-4 लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप फोकस्ड हैं, है ना, फॉर इम्प्रूविंग दैट रिलेशनशिप. यस, पॉसिबल, वेरी गुड. There's something coming to my mind. Can Yeah. I? So I don't know. So I was thinking, let's say if you look at the entire skeleton and framework of Ashtang Yoga, so we learned various steps. And in most of the steps, like asana, niyam, pratyahar, sorry, I don't know the sequence right now, but I think they were not necessarily attached to a manifestation. So if I have to look at dharana without the element of manifestation or any desire, just simple dharana, which could be just purely towards, let's say, my next step of Ashtanga Yoga, which is dhyan and then samadhi, without having to even think of any desire, be it worldly or spiritual. So if you can maybe throw some light at how dharana can be viewed and integrated into one's life without necessarily having a desire or a need of manifestation. I get your point. I got your point, Amit. Let's acknowledge Amit ji. That's a very valid point because there are many people who may not be knowing about anything about Ashtang Yoga.
वो कहेंगे ये सब बेकार की चीजें हैं। हाँ, यम हाँ, नियम तो मतलब मॉरल पॉइंट साइंस है, आसन वासन मैं नहीं अगर करता। मैं हाँ हाँ जी। अच्छा, अगर मैं किसी भी मटेरियल वर्ल्ड की डिजायर से कनेक्ट किए बिना हम्म धारणा को समझना चाह रहा हूँ, हम्म तो क्या है? मतलब वी ऑल नो मैं फोकस। समझ गया आपके उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, है ना। तो लेट अस कंसिडर द पर्सन हु इज नॉट एट ऑल ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी, उसको कोई मतलब ही नहीं है स्पिरिचुअल जर्नी से, है सब बकवास, सब ढोंगी हैं, सब पोंगी हैं, जो भी बोलता है वो बोलता है ना? तो देयर इज नथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी इन हिज लाइफ एंड ही सेज आई वांट टू लिव माय लाइफ। मैं पिछले जन्म और बाद के जन्म की कोई बात नहीं करना चाहता, मेरे पास ये लाइफ है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने पेरेंट्स की सेवा कर रहा हूँ, मैं एक अच्छी जिंदगी बिता रहा हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। करेक्ट? दिस इज द दिस इज द स्टोरी ऑफ 99% ऑफ द people on the planet earth who don't do swadhyay and who are talking on the face of it. Face of it means क्या हाल है, बहुत बढ़िया। और क्या बहुत बढ़िया के पीछे क्या है हकीकत है, मोस्ट ऑफ अस नो दैट, है ना। जब भी आप किसी से पूछते हैं हालचाल, किसी से पूछ लो तो पता लग जाता है वो कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, है कि नहीं। हालत खराब होगी, जैसे कॉमन कॉमन डायलॉग है, बोलना नहीं चाहिए वैसे यहाँ पे, ये जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। हाँ, तो जिंदगी झंड हो गई है, मिजरेबल है, सफरिंग है, लेकिन मुंह पे स्माइल चिपका के बोलते क्या हाल है, बहुत बढ़िया जी। दिन भर काम करते हैं, मर मर के काम करते हैं, और उसके बाद शाम को जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, थोड़ी पार्टी शार्टी कर लेते हैं, थोड़ी चिकन विकन फाड़ लेते हैं, 2 4 पैक लगा लेते हैं, वापस आकर सो जाते हैं, बहुत बढ़िया कट रही है। तो जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी कट रही है। होता है, बिल्कुल होता है। तो उनकी लाइफ में अगर आप पूछोगे क्या चाहिए आपको लाइफ में, बहुत सारा पैसा चाहिए, राइट, एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, यानी कि सुख शांति चाहिए मुझे। So every action that a person is doing actually is, what is the purpose behind that? Happiness. Everybody is looking for happiness, है कि नहीं। एक पर्पस अगर मैं देखूं, अब स्पिरिचुअलिटी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, हर इंसान जो भी एक्शन कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि मेरे को सुख शांति मिले। करेक्ट? अब 99% ऑफ द लोग जो हैं, जो वर्ल्ड में सफरिंग में हैं, मिजरी में हैं, उनको सुख शांति नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही है? Those who are not on the spiritual journey, look at their life right now. What do they want? They also want the same thing. अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्यों? They have no idea about, now we know. So let us look at from what is the difference. यम और नियम के बारे में कुछ नहीं जानते वो, by hook or by crook they want to fulfill their desires. करेक्ट? योगा आसन प्राणायाम वगैरह नहीं करते हैं, तो माइंड उनका स्कैटर्ड है और माइंड बहुत पोल्यूटेड है। मानते हो ये बात आम इंसान की? तो माइंड स्थिर नहीं है, यानी कि इट इज लाइक ए पॉन्ड विच इज डर्टी एंड टर्बुलेंट, जो मैंने शुरू में कहा था। ऐसे माइंड से आप कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे। अगर माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, देन माइंड इज स्कैटर्ड, माइंड इज पोल्यूटेड। सो आपको हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप में झटके ही लगेंगे, फेलियर ही मिलेगा, सेटबैक्स ही मिलेंगे, सफरिंग एंड मिजरी ही मिलेगी। यस और नो? यस, एग्रीड मोस्टली। अब उस सफरिंग और मिजरी से अगर फ्रीडम चाहिए, तभी तो हम योग मार्ग में हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग्स एक्सेप्ट ह्यूमंस आर इन द भोग योनि। भोग योनि समझते हैं? जो भी जीव है वो भोग योनि में है। बाकी स्पीशीज, एक इंसान है जो भोग योनि में भी रह सकता है और योग योनि में भी आ सकता है। दैट मीन्स नॉर्मली ही विल बी इन द भोग योनि, बट इफ ही वांट्स, वो योग करके, अष्टांग योग में आके, या फिर ज्ञान योग या कर्म योग या भक्ति योग, कोई भी राज योग, ये सारे योग मार्ग में आके योग योनि में आ सकता है, जहां वो अपनी चेतना को उठा सकता है और अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा सकता है। यस, so when the mind is stable and the mind is pure, then you have a better chance of success and in life. Now you can manifest a good health, you can manifest wealth in a better way with peace, lot of peace and prosperity, and you can have enjoyable relationships. Yes, इसलिए ये जरूरी है कि हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के बाद धारणा में आए। यहाँ पे हम अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि वी आर एक्चुअली लिविंग अवर लाइफ विद ए वेरी साउंड फाउंडेशन। यहाँ पे परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट वेल्थ एंड परफेक्ट रिलेशनशिप्स हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
based on universal laws and based on the laws where God will always say Tathastu, with a lot of divine grace and blessings, we can achieve success in life. Now, Amitji, did I answer that question to some extent? I think, yeah, sure. But I think there's a lot more that the adaptation of Dharana brings into the spiritual journey. Share there are a that. lot- So this is the first time actually my doors are opening right now on that. तो पॉइंट मेरा यही है, धारणा बेसिकली मींस यू आर लिविंग ए फुलफिल्ड लाइफ, फुलफिलिंग एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, सुख शांति के साथ जो हमारा हर एक्शन के पीछे जो पर्पस है वो फुलफिल करते हुए मैं एक एंजॉयबल लाइफ जी रहा हूँ. दैट इज पॉसिबल व्हेन यू रीच द लेवल ऑफ धारणा. दैट इज व्हाट आई मेंट. या The way I look at dharana in another way is to, let's say if we end up having a dharana or focus in a particular moment, which is exactly this point of time, which is 9:30 p.m. on whatever 6th. So dharana on this moment, जैसे मैंने भी आंसर दिया, जैसे आपने पूछा कि क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव है इस सेशन से बेस्ट करना. That is fine. तो फोकस इन द करंट मोमेंट, एब्सोल्युटली, और वो नित्य क्षण उसी मोमेंट में फोकस रह पाना. तो चलो 10 बजे के बाद पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फोकस ऑफ लाइफ आफ्टर 10 o'clock? तो वो उस समय वो होगा जिस मोमेंट में हूं मैं, चाहे जैसे तो वही मैं पूछ रहा हूँ. So you don't have to change your focus every moment. What is important for you right now means what is important for you in the area of health, wealth and relationships as of now. Look at that. Right now doesn't mean this very moment. इस very moment में तो I am free, मेरे को कुछ नहीं चाहिए. I am in blissful condition. मैं सेशन ले रहा हूँ, I am absolutely blissful, I have no desires. But looking forward in life, what is beckoning you? है ना? तो मेरे लिए 17th में है, मेरे लिए 3 महीने के अंदर मेरे बेटे की 5th सेमेस्टर की फीस है. So these are some of the things that are calling me. So life calls you and then you take action. And there is a purpose behind every action, is basically to ensure सुख शांति हो फैमिली में. That is what I meant. और वो सुख शांति तब कर सकते हैं जब आप धारणा के लेवल पे अपनी लाइफ जी रहे हैं. That is the point I wanted to make. Clear? Yeah, I get that. Now, another thing that is very, very important. So thank you, Amitji, for bringing up that. I think things would have been more clear to everybody. Now, before I start not a new topic, but a very important part of that discussion, let me first hear Sandeep. Sandeep, yes, go ahead. सर इसमें ही रिलेटेड बात मैं बता रहा था, जैसे हमने वो जो अपने ऋषिकेश में भी बात की थी, जैसे मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड एंड मोटिवेशन है, वो भी एक साइड बाय साइड हमें गाइड करता रहता है कि हम लाइफ में हमारी क्या जरूरतें हैं जिन्हें हमें पूरा करना है और ओवरऑल आगे क्या है. जैसे मैंने अपना भी बताया था, हम जिस स्टेज पे हैं तो हायरार्की ऑफ नीड में 1 2 3 हमारी मेजरली पूरी हो चुकी है, तो हम एस्टीम नीड्स और उस दूसरी जो लेवल 4 और 5 पे कर रहे हैं. तो आज हमें पैसा उतना मोटिवेट नहीं कर रहा जितना हमें वो एस्टीम नीड्स और दूसरी नीड जो हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, वो हमें ज्यादा मोटिवेट करती हैं. जो भी हम अपना कार्य कर रहे हैं उसमें वो एक जमाना था जब हमारे लिए दूसरी नीड्स ज्यादा जरूरी थी, लेकिन आज हमने वो पूरी कर चुके, तो अब हमें दूसरा कोई पैसा दे रहा है वो उतना मोटिवेट नहीं कर रहा जितना एक हमारे को एक खुद को जिस चीज में आनंद आ रहा है, पैशन पे अगर हम काम कर रहे हैं. यस. हालांकि सेहत ठीक भी नहीं है, पैसा भी नहीं मिल रहा, तो भी वी आर वर्किंग ऑन अवर पैशन. तो वो भी एक साइड बाय साइड हमें गाइड करता रहता है कि हमारी क्या हमें चाहिए. वो डेफिनेटली. और परेशानी जो होती है लोगों को ज्यादातर इसलिए होती है, लोग ओवर एक्सपेक्ट करते हैं कि पता नहीं क्या मिल जाए, और वो चीजें जो है ना वो लाइफ में परेशानियां लाती हैं. मेरी Absolutely right, Sandeep ji. So let's acknowledge Sandeep ji. Yes. So what is really important is, as you rightly said, एक लेवल के बाद, जैसे अगर ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम आपका कंप्लीट हो गया, वानप्रस्थ में आ रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली यू विल नाउ बी लुकिंग टू हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी. तो उसमें सेवा भाव आ जाता है. तो अपनी साधना तो रहेगी, बिकॉज नाउ इट इज मूविंग टूवर्ड्स द वननेस, है ना, टूवर्ड्स द डिविनिटी.
So the divine is within me. I want to manifest that divinity and contribute to the society. So that is another one important aspect of spirituality or the social commitments that we have. That becomes important. Yes, absolutely right. बिल्कुल सही है. इसीलिए हम ये इवेंट भी तो कर रहे हैं. इसीलिए तो हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि लोगों में जागृति आए. This session is also a way of sadhana and satsang where seva and satsang where I'm intending that people wake up and start moving on the spiritual journey in the right path, right? Good, very good. So let's acknowledge. Now moving on to another part. When we talk of desires, it is very, very important that the desires need to be fulfilled. Need to be filtered. क्यों? क्योंकि सारे डिजायर्स में अगर आप देखेंगे कुछ तो विजुअल थिंकिंग होती है. तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है जो मेरी डिजायर है, इज इट पॉसिबल? क्या ये इम्पॉसिबल तो नहीं है जो मैं डिजायर कर रहा हूँ? बिकॉज यू कांट फूल द यूनिवर्स. यूनिवर्स विल ओनली गिव यू व्हाट इज रियल फॉर मी. यूनिवर्स मेरे को वही देगा जो मेरे लिए रियल है, वही देगा जो मैं डिजर्व करता हूँ, है ना? तो सबसे पहला डिजायर में जो होता है, इसको तीन जगह से फिल्टर करना होता है. सबसे पहला, इज इट पॉसिबल? क्या मेरी ये डिजायर इम्पॉसिबल तो नहीं है? पॉसिबल है फॉर अ ह्यूमन बीइंग. सेकेंड, इज इट रियल फॉर मी? हाँ, तो ये अचीवेबल है कि नहीं मेरे लिए? तो इसको हम बोलते हैं POTS, PAW. तो इज इट पॉसिबल, इज इट अचीवेबल, यानी कि क्या ये रियल है मेरे लिए ये डिजायर. एंड थर्ड है, एम आई रियली वर्थ इट? दैट मीन्स क्या मैं वर्दी हूं उस रिजल्ट को पाने के लिए? देन आई गो हेड एंड ट्राई माई बेस्ट टू फुलफिल दैट डिजायर. तो ये 3 पॉइंट्स हैं जरा चेकलिस्ट में जो आती हैं कि इज इट पॉसिबल, इज इट अचीवेबल, दैट मीन्स इज इट रियल फॉर मी. पॉसिबल तो फॉर ह्यूमंस, इज इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स? तो इम्पॉसिबल ड्रीम नहीं होना चाहिए, डिजायर नहीं होनी चाहिए. दूसरा, ये मेरे लिए पॉसिबल है क्या? मेरे स्ट्रेंथ और मेरे कैपेबिलिटी के हिसाब से इज इट ओके फॉर मी? एंड थर्ड, डू आई डिजर्व इट? है ना? तो ये 3 चीजें हैं जो हमारे डिजायर को क्वालिफाई करती हैं कि यस, नाउ आई कैन गो अहेड एंड मैनिफेस्ट दैट डिजायर. तो आई होप इज दिस क्लियर फॉर एवरीबॉडी और यू नीड सम डिस्कशन. अगर डिस्कशन चाहिए तो यू कैन आस्क ए क्वेश्चन. Otherwise, if it is clear, then we can move on to the next step. Whatever is your understanding of dharana in your life right now, किस तरीके से आप इसको अचीव करना चाह रहे हैं. तो once dharana is clear, then the next step becomes very, very clear. So actually धारणा में क्या हो रहा है देखिए. धारणा में एक जीवा है, मैं हूँ, शशिधर. एक परमात्मा है, डिवाइन. क्या वो बाहर मान लूँ या अंदर मान लूँ, जहाँ मर्जी मान लूँ, एक डिवाइन है. एंड देयर इज अ डिजायर. तो कैसा होता है ये जीवा? यू कैन से क्या बोलते हैं, रेडिएट्स अ डिजायर, है ना? रेडिएट्स अ थॉट, इंटेंशन. वो इंटेंशन जो है, इट इज लाइक थ्रोइंग ए पेबल इन द पॉन्ड. आपने कभी बच्चों को देखा, छोटे बच्चे को, पानी अगर स्थिर है बिल्कुल, उसमें एक पेबल डाल दें तो क्या होगा? पूरे रिपल्स फैलते हैं. सिमिलरली, एन इंटेंशन इन माई माइंड will create a ripple in the cosmic mind. That means जो cosmic mind है, which is in harmony with the human mind, तो उसमें एक ripple create होगा, and that ripple will go and get it the thastu and come back in my life and get manifested. That is the process. Yes. So जीवा है, एक desire है और परमात्मा है. ये 3 elements हैं यहाँ पे. तो मैंने अपने desires को fulfill करना शुरू किया. धारणा. क्यों? क्योंकि मैं ऐसे लेवल पे हूँ जहाँ पे माइंड साइलेंट है, माइंड स्टिल है, बुद्धि स्थिर है. तो मेरे इंटेंशन में बहुत पावर है विच कैन मैनिफेस्ट इन माय लाइफ एंड आई कैन लिव ए सुख शांति के साथ. मैं अपने डिजायर्स को फुलफिल कर रहा हूँ, विच मीन्स आई एम लिविंग ए सक्सेसफुल लाइफ एंड आई एम मैनिफेस्टिंग द डिजायर्स ऑफ माई लाइफ. करेक्ट? अब धीरे धीरे मान लीजिए मैंने अपने डिजायर्स को फुलफिल कर लिया. हेल्थ भी अच्छी है, वेल्थ भी अच्छी है, रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, कंट्रीब्यूशन वाला लेवल भी सही चल रहा है, यानी कि सारे एक्टिविटीज अच्छे चल रहे हैं. So what happens at some point of time? After some point of time, it is like I outgrow my desires. Remember, as a child, we had a lot of desires. I desired marbles. मेरे को कंचे बड़े अच्छे लगते थे. हाँ, उसके बाद मैं पतंग इकट्ठे करता था, बहुत सारे पतंग मेरे को बड़े अच्छे लगते थे. उसके बाद ट्राइसिकल, फिर बाइसिकल. So these are the desires which, as a child, I had, and I experienced it, and then I outgrew it.
Similarly, at every point of time, we have outgrown our desires and we have let it go. है ना? तो हम outgrow करते हैं अपने desires को, yes or no? Yes. तो धीरे धीरे हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी, गृहस्थ जीवन भी हमने पार कर लिया, 60 इयर्स तक पहुंच के मान लीजिए अब, या उससे पहले भी हो सकता है, 30 की एज में भी हो सकता है. आई एक्चुअली स्टार्टेड दैट व्हेन आई वाज इन 30, 32, 33. या सो एक लेवल आता है व्हेन आई से इनफ ऑफ डिजायर्स. अब डिजायर्स फुलफिल हो गई हैं, यानी कि मैंने जितने डिजायर से एक्सपीरियंस कर लिया है, आउटग्रो कर लिया है. आई नो दिस, डिजायर्स आएंगे, मैं एक्सपीरियंस करूंगा, आउटग्रो करूंगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा. डिजायर्स नहीं रोकूंगा मैं. आई विल नॉट किल माई डिजायर्स. I will kill the expectation and the attachment with the desire. So desires होने हैं, आने दो. अभी भी मैं अगर वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूँ तो मे बी in 1 year's time I will go for a world tour with my wife and my family. Possible? Yes, possible. Correct? तो desires आएंगी, उसको फुलफिल करना है और आउटग्रो करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग बोलते हैं. प्रवृत्ति मीन्स यू इंडल्ज इन द डिजायर्स, निवृत्ति मीन्स यू से इनफ ऑफ इट, हो गया. करेक्ट? तो प्रवृत्ति और निवृत्ति से आई कैन मैनेज माई डिजायर्स वेरी इजिली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एंड अटैचमेंट. धीरे धीरे क्या होगा? आई विल से इनफ ऑफ डिजायर्स. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? जीवात्मा और परमात्मा रह गए. तो नाउ आई एम इन द स्टेज वेयर आई एम वांटिंग द गॉड, कि भगवान आपने बहुत कुछ दे दिया मेरे को, थैंक यू वेरी मच. नाउ आई वांट टू बिकम वन विद यू, सो आई वुड डिजायर यू. डिजायर नहीं खत्म होनी चाहिए, पैशन नहीं खत्म होना चाहिए. ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर हैज टू चेंज फ्रॉम द वर्ल्डली मैटर्स टू द डिवाइन. समझ रहे हैं? पहले वर्ल्डली मैटर्स के जितने डिजायर्स हैं फुलफिल कर लो, तसल्ली हो गई, हो गई. नाउ यू गो फॉर द डिजायरिंग द डिवाइन. दैट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट वी विल बी टॉकिंग ऑफ, विच इज ध्यान. तो धारणा में 3 एस्पेक्ट्स हैं, जीवात्मा, डिजायर, परमात्मा. जब डिजायर्स पूरी हो जाती हैं तो सिर्फ 2 एस्पेक्ट रह जाते हैं, जीवात्मा और परमात्मा. दैट इज द लेवल ऑफ ध्यान. मेकिंग सेंस? एम आई ऑडिबल? या जीवात्मा, परमात्मा, एंड व्हाट वाज द फर्स्ट वन? जीवात्मा हूं मैं, शशिधर. परमात्मा है द डिवाइन, कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक बॉडी, जो भी है. एंड जो डिजायर है मेरी, तीसरी. तो डिजायर्स अगर पूरी हो गई, अब मेरे को समझ में आ गया कि डिजायर तो खत्म नहीं होंगी, तो डिजायर आएंगी, आने दो, मैं फुलफिल कर लूंगा. प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग से मैं फ्री भी हो जाऊंगा डिजायर से. नथिंग रॉन्ग विद द डिजायर्स. ओनली थिंग इज आई शुड नॉट गेट अटैच्ड टू द डिजायर. आई शुड नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट. इन दोनों से अगर मैं फ्री हूं तो आई एम फ्री फ्रॉम डिजायर्स. लेट इट हैपन, लेट इट कम, लेट द लाइफ कम. आई विल एंजॉय इट द वे इट इज कमिंग. So now I am free from the desires. Now there are only 2 aspects left, Jivatma or Paramatma. So Jivatma says, now I would desire you. So same desire and passion which was for the health, wealth and relationships, now it is for the divine. That is the stage called ध्यान, जो हम अगली बार बात करेंगे. करेक्ट? और ध्यान के बाद क्या हो जाएगा? 3 से 2 आ गए, 2 से 1 हो जाएंगे. That means जीवात्मा and परमात्मा become one. That is the oneness. Making sense? So धारणा, ध्यान एंड समाधि टुगेदर आर एक्चुअली कॉल्ड द संयम. इसको संयम बोलते हैं, जहां ये तीनों पार्ट्स को एक साथ लिया जाता है. एंड द डिफरेंशिएशन इज यू मूव फ्रॉम स्टेज ऑफ 3 to the stage of 2 to the stage of 1. That is dharana, dhyan and samadhi. But for that you need to be very, very clear that your desires are taken care of. At least you are free from the desires. You can enjoy all the desires but be free from them. Then you can move into the level of dhyan, which is meditation or the meditative state, which we will be talking of in the next session. But is this much clear? तो हम कहाँ पे पहुंचे हैं? हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार करके इंद्रियों पे कंट्रोल है, माइंड साइलेंट है, स्टिल है, प्योर है, बुद्धि स्थिर है, और मैं अपने डिजायर्स को फुलफिल कर रहा हूं. यहां तक हम पहुंचे हैं अभी धारणा. एनी क्वेश्चंस? और डिजायर्स को हमने कैसे क्वालिफाई करना ये भी देख लिया. इट शुड बी पॉसिबल, इट शुड बी अचीवेबल, एंड आई शुड बी वर्दी फॉर इट. So let me give you an example also. If I have a desire, I will land on the moon. Is it possible? Yes, it is possible. But is it achievable for me? Not at all. It is not real for me. ये मेरी wishful thinking है. Right?
Now I modify that. I will land on the sun. और मैं रात को उतरूंगा. तो मैं रात को सूरज पे लैंड करूंगा. ये पॉसिबल है? इट इज इम्पॉसिबल, है ना? ये पागलपंती है. ये कोई पप्पू का दिमाग हो सकता है, हाँ, बट ये पॉसिबल नहीं है. इट इज इम्पॉसिबल. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कुछ डिजायर्स इम्पॉसिबल हैं, पहले ही काटा मार दो. इसको मैनिफेस्ट करने की सोचना भी मत. दूसरा पॉसिबल है लेकिन मेरे लिए रियल नहीं है, उसको भी काटा मार दो. इट इज नॉट वर्थ इट. तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले दोनों तो कोई ना कोई बता ही देगा आपको कि ये पॉसिबल है या अचीवेबल है ना? पर लोगों से पूछोगे तो वो बता देंगे बिजनेस करेगा, शक्ल देखिए अपनी, आज से कुछ अचीव किया है लाइफ में. सो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट व्हेन यू गो फॉर एडवाइस. क्योंकि बाहर के लोग जो बोलेंगे वो कहेंगे तू तो बिल्कुल बच्चा है, तेरे को अक्ल नहीं है, तू मैच्योर नहीं है, तू कोई बिजनेस पक्का पैसे डुबोएगा, कुछ मत कर, चुपचाप नौकरी कर. समझ गए? तो ऐसी एडवाइस भी मिलती है. तो यू हैव टू टेक योर ओन कॉल. इज इट पॉसिबल? इज इट रियल, अचीवेबल? बट थर्ड वन इज, do I really deserve it? Am I worthy for it? Okay? तो जितने लोग बिजनेस में हैं, अगर आपने बिजनेस किया हुआ हो या कर रहे हो, अगर आपको सडनली कॉल आती है फ्रॉम द, इसकी बात करें हम, अडानी, ओके, अंबानी, हाँ, तो अंबानी ग्रुप से फोन आता है कि congratulations, you have been appointed as the CEO of our entire organizations and all the portfolios. You are the CEO. Are you capable enough to handle it? अगर आप बोलते हो हाँ, देन अगर आपकी नॉलेज है, आपकी स्किल्स हैं और आपकी एक्सपर्टीज है, देन यू कैन से यस, आई एम वर्दी. और थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कैन यू हैंडल दैट? So you have to understand, when you are desiring something, you have to be very, very clear. Do I deserve it? Am I worthy to handle that situation or handle that desire? Clear हो रहा? तो वो ये बहुत जरूरी है. पॉसिबल है, अचीवेबल है एंड वर्दीनेस. ये तीनों अगर ओके है, then you go ahead with full throttle and fulfill your desire. And उस desire को fulfill करके, without expectation, without attachment, enjoy your life and be free from the desires. And at some point of time, you will outgrow that desire also, and then you will be ready for the 7th step of Ashtang Yog, which is Dhyan. When you desire the divine, nothing else, nothing less than the divine will satisfy you now. That is the level of Dhyan. Okay, तो ज्ञान पार्ट इतना ही रखूंगा अभी मैं. Let's take more sharings. So anybody who wants to share your understanding, or if you have any questions, we are free to ask that. So please go ahead. Yes, Amit ji, are you raising your hand? No, not now. I think. Okay. I think it's better. That I think I will not like to talk what I thought that I will be talking about. It's okay. Whatever you want to share, if you're comfortable, or if you want to share, I'm you can. but I think that could be a little out of the subject of the very specific topic of Dharana today. Because the way I looked at manifestation, you remember, so that creative visualization and inclusion of potential loser and gratitude. Yes. So that is the process. That is the path. That is the process of manifesting the desire, which is absolutely right. उसमें कोई problem नहीं है. So that is part of it. The context, unless you want me to talk about that. Okay, that's fine. I'll leave it to you. So Anybody else? Anybody else who wants to share? अमित जी, आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए. थोड़ा सा रिफ्रेश करके अगर आप बोलना चाहें तो take your time. You have some time, right? Okay. Anybody else who wants to share? भारती जी, अपूर्वा जी, संदीप जी ने तो शेयर किया. विजय जी, कमलेश अग्रवाल जी, okay. And Aman, Tarun, anything you want to share? Please go ahead. Yeah. Your takeaway or any questions, anything that you want to ask, please go ahead. So I said in the beginning that your understanding of Dharana will change after the session. So how many of you have a better clarity on Dharana now? You can share your understanding.
Yes, Apurva ji, go ahead. So I will share my understanding of dharana first. Of course, it was all about focusing, and focusing on just one subject or pinpointed focus. Yes. Like when we go to Vipassana, we focus on the breath coming in, going out, on a pinpoint on tip of your nose, and then you then take that focus to all around your body. So that was an exercise of dharana in my mind. Or you focus on candle flame, and in different languages it is called differently. Pratak, yeah. प्रातक बोलते हैं इसको. So that was to focus on a pinpointed, a single subject during this session. And of course, dharana was purely connected to spiritual, life, spiritual progress, spiritual way of doing things, way Yes. of progressing. That was my understanding of dharana. Today's session actually widened the understanding of dharana from limiting it to spiritual to bringing it to normal human life, making it more wider focused, more applicable to anybody's life, any normal life, and making it work in that manner to fulfill desire, to fulfill your intentions. So, of course, desires without attachment, and desires with appropriate deserving position, yes, is something that is achievable, and that is what dharana is a wider and newer understanding that I have got today, and I must thank you for that. Very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Yes, great. See, people often misunderstand कि या तो मैं spiritual हूँ या मैं materialistic हूँ. अलग अलग कहाँ हैं? Materialistic success के लिए भी spirituality जरूरी है. अगर आपको holistic life जीनी है तो materialistic life में जो success है, it is like adding zeros. I keep saying that. And spirituality just puts a one in front of it. So the materialistic success becomes more meaningful when you are moving on the spiritual journey. So spirituality will actually empower you to enjoy life fully. It's not about abstaining from life. It is about living life fully. So that is what we need to understand. Spirituality ये नहीं है कि desires नहीं होनी चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए. अरे पैसे कमाओ, desires fulfill करो, but don't be attached to it. आपके पास जो कुछ भी resources हैं, you are not the owner, you are the custodian. चाहे वो घर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जितनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, यू आर नॉट कंसिडर दैट यू आर नॉट द ओनर, यू आर द केयर टेकर, यू आर ए कस्टोडियन. 5 स्टार होटल में जाके ठहरते हैं हम, या किसी होटल में जाके ठहरते हैं, 4 दिन के लिए ठहरते हैं. कैसे जीते हैं? ये मेरा कमरा है, इसमें मैं मेरे हिसाब से आएगा, सारी चीजें मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ये क्या, ये साफ करो, वो करो, ये करो, वो करो, सब कुछ आप करते हो. 4थे दिन के बाद जब चले जाते हो, यू आर नॉट इवन अटैच्ड टू इट. उसके बाद कौन था पहले, कौन था बाद में, नथिंग मैटर्स. तो लाइफ भी वैसे ही जियो ना. 4 दिन की तो जिंदगी है, और 2 दिन तो शायद कट भी गए हैं. हाँ, तो 2 दिन और हैं. ओनर बन के क्यों जी रहे हो? केयर टेकर बन के जियो. एंजॉय ऑल द रिसोर्सेज, बी एब्सोल्युटली फ्री, बिकॉज आपको जाना है, चेकआउट करना है आपको कभी भी. लिव लाइफ लाइक दैट एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फ्री, एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी, एंड दैट इज लग्जरी आल्सो, लग्जूरियस लाइफ. स्पिरिचुअलिटी का मतलब गरीबी में जीना नहीं है. यू डोंट लिव इन मिजरी, यू डोंट लिव इन सफरिंग. बीमार हो, पैसे नहीं है, तब स्पिरिचुअलिटी नहीं है. Right? Abundance mentality is spirituality. I often say that.
Very good, Apurva. That's good that you got some breakthroughs in your concepts. So when you transform your concepts and beliefs, that is also dharana. आपकी धारणा change हो गई. Good. Right. Anybody else wants to share? Whatever opens up. Tarun, Vijay जी, कुछ खुल रहा है. कमलेश अग्रवाल जी, पहली बार आ रहे हैं. अमित जी, कमलेश जी, you know? No. Okay. सर ये मेरी मौसी हैं ये. Oh, अच्छा. Okay. She is 77 years of age and she's a spiritual person. Very good. नमस्कार जी, प्रणाम. तो अगर आप कुछ बोलना चाहती हैं तो वेलकम, अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली राइट. Yes, Tarun, you want to share something? Go ahead. You have unmuted yourself. Tarun, you're frozen, huh? Or am I frozen? No, he's frozen. He's frozen. Okay. Shashi sir, Raman this side. I Yes, have one Aman. question. Yes, go ahead. Dharana is also about the perception, right? You can say that if that is governing your life, if that is governing your what you're focusing on. What are you focusing Because on in- and the background behind it? That is all part of dharana. Your Okay. beliefs, your concepts, your perceptions, everything will be influencing your dharana. Yes. But sir, Dharana is also one of the very influential term when we use it from the perspective of others. So for example, when we say कि तेरी उसके बारे में क्या धारणा है? So what we are asking the other person is what is his perception about the third person? Yeah. So this is a swadhyaya part. We are here to look into our life. So this dharana will be Okay. pertaining to us, not to others. Okay, sure. Yeah. So look into Sure. your own life and then see what is the focus or what are you focusing on? What are you concentrating on? That is important. Okay. आपके डिजायर है वहीं पे, आपका पैशन है, बिल्कुल Okay. सही है. Sure. आपका पैशन, आपका डिजायर सब सही है. Just look at what are you focusing on. Like a student will be focused on studying maths. He is focusing on maths. Correct? उसी पैशन और उसी Okay. कंसंट्रेशन के साथ वो मैथ्स पढ़ रहा है. उसी कंसंट्रेशन के साथ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे हैं. उसी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ कोई साइंटिस्ट अपनी इन्वेंशन में लगा हुआ है. तो हर एक जगह पे धारणा है. Okay. तो आप अपना बिजनेस शिद्दत से कर रहे हो, Sure. वो भी धारणा है. You are pursuing something, you are maybe Okay. as your whatever qualification जो भी है, डॉक्टर है, प्रोफेशनल अपनी करियर को फॉलो कर रहे हो पूरी शिद्दत के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, वो भी धारणा है. Sure. To understand it that way. It is for you, not for others. But what you are saying is true. आमतौर पे Sure. जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, हाँ तेरी धारणा क्या, क्या क्या मंशा लेके आया था मेरे बारे में बताओ. तो व्हाट आर यू, अपने दिमाग में क्या खिचड़ी पका रहा है, उस हिसाब से भी हम पूछते हैं तेरी धारणा क्या है. तो वो अलग चीज है. बट वी आर नॉट लुकिंग एट अदर्स, वी आर लुकिंग एट आवरसेल्व्स. गुड अमन, यू क्लैरिफाइड दैट पॉइंट. Yes, anybody else wants to Types share? the aura of a person, if I understand correctly. हाँ, नहीं, ऑरा नहीं है, ऑरा अलग है. ऑरा इज अ एनर्जी फील्ड. Okay. एनर्जी, वाइटल एनर्जी की फील्ड है वो. Okay. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड योर फिजिकल बॉडी इज ऑरा. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वहां पे तो हीलिंग होती है, वहां पे स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, कार्मिक हीलिंग होती है, वो सब अलग है. बट यस, धारणा इज आपके दिमाग में क्या चल रहा है. मनोमय कोश की बात कर रहे हैं, प्राणमय कोश की नहीं. विचार सर, इससे Thought थोड़ा is- सिंप्लीफाई कर thought is सकते हैं. a big- विचारधारा इस धारणा. सब कुछ मान रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप किस पे फोकस कर रहे हो उस पे डिपेंड करेगा. आपका बिलीफ क्या है, आपके कंसेप्ट क्या है, आपका पीछे का परसेप्शन क्या है. Okay. सारी चीजें फोकस होके ही तो आएंगे आपके ऊपर. तभी तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है, क्या उसका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है? When Sachin used to play, he was very focused. अर्जुन जब तीर चला रहा है, उसको सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही है. करेक्ट? उसको पेड़ नहीं नजर आ रहा, उसको बाकी लोग नजर नहीं आ रहे, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसको सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है या मछली की आंख, जो भी है. हाँ, तो समझ रहे हो? दैट इज द काइंड ऑफ फोकस दैट वी आर लुकिंग एट. तो उसके पीछे उसकी माइंडसेट भी है ना.
उसके पीछे उसका थॉट प्रोसेस भी है, उसका माइंडसेट भी है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी है, क्लियर कट फोकस भी है, सब कुछ है. All that is part of dharana. So look at that. Sure. But a person who is scattered, जिसका माइंड हर जगह भाग रहा है, उसमें धारणा Oh, होगी नहीं ना. thank you. So dharana is developed by a seeker by following the first 5 steps. Then only dharana is developed into a human being. उसके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जरूरी है, तभी धारणा डेवलप होगी. Look at it that way. Sage Patanjali has made this a 6 step with lot of insights, right? Not like that कि किसी भी पॉइंट को कहीं भी डाल दिया. प्रत्याहार के बाद धारणा आ रही है. You understand? It is like that. This is a Sure. tool or a state where you can enjoy your life fully and सब कुछ एंजॉय कर सकते हो, अपने डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हो, सुख शांति के साथ जी सकते हो, एंड यू कैन एंजॉय फुलफिल्ड लाइफ. लुक एट इट दैट वे. That is the purpose of dharana. Sure, Shashi. Yeah. Very good, Aman. Yeah. Let's acknowledge This is Amanji. something very interesting. Till now I was only understanding dharana is only about perception, but thanks for this. This is a lot of good dimension for me. Yes. Because whatever is mentioned in this Patanjali Yoga Sutra is not very simple. Uska English translation, the Google will tell you something else. Dictionary will tell you something else. But the actual meaning behind dharana is very, very different. It can transform your life. Yes. Very Sure, good. sir. Very good. Yes. Let's acknowledge everybody who shared. So Tarun, I hope it is clear. Intention, mindset, Yes. perception, सब कुछ मिला लो, सबकी खिचड़ी बना लो तो धारणा बन जाएगी. Right? Okay. Vijay ji, anything you want to share? It is just the schedule time. We have reached the schedule time, so I'll take a few more minutes. Anybody who has any question or anybody who wants to ask something. Bharti ji, आपने बीच में video on किया था. You wanted to share something, I suppose. So if you are okay, you can share. Yes, Vijay ji. No, sir, nothing from my side. I'm Okay. listening. Yeah. Okay. So any takeaway you want to share in one line? कुछ बदला? कुछ No, thought not process really. बदला? No. Not really. Okay. So we will have to meet in the spiritual retreat to do that, huh? Okay, I get that. Yeah. All right. Yes, Amit ji, you wanted to share something. Go ahead. So dharana, okay, layman's language, let's say 5 years back, what I used to think dharana is focus या फिर intention. That's it simply, without any depth to it. चाहे वो छोटा सा काम हो, एक मिनट का, चाहे वो ओवर लाइफ में. एक धारणा वो भी थी कि किसने कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं, एक वो धारणा, कुछ भी, या किस तरह का लाइफस्टाइल धारित कर रखा है. Yes. एक वो धारणा का मतलब था. ये एक अष्टांग योगा जब सुना, करीब शायद 5 साल पहले या 10 साल पहले, पता नहीं, इसमें धारणा का शायद मतलब बाद में समझ में आया. लेकिन जो भी अंडरस्टैंडिंग मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में डेवलप हुई, देखिए स्पिरिचुअल जर्नी सबकी चल रही है. अब जब काफी आगे चली तब देखा अच्छा एक अष्टांग योगा नाम का एक फ्रेमवर्क है. तो फिर अपने आप को उसमें रख करके देखा कि अष्टांग योगा के फ्रेमवर्क पे या स्केल पे मैं कहाँ खड़ा हूँ और कितनी जर्नी हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल. Yes. तो उसमें समझ में आया कि ये जो अष्टांग योगा धारणा बोल रहा है, मैंने कुछ और चीज को धारणा समझ के अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया था. या नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी बिफोर द सेशन, जो कि अभी भी है, वो ये कि धारणा एक ऐसा अष्टांग योगा की डेफिनेशन के हिसाब से, बाहर इसके अलग मतलब हो सकते हैं. It has to be only a dharana or an intention which is only and only towards the spiritual evolution only, and not any worldly desire. What I'm saying is in contrast to what you said just now. For example, It's okay. मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो सब चीज ठीक है, वो सब डिजायर्स की. तो धारणा का हिंदी का वर्ड है, इसके अगर 3 इंग्लिश के सिनोनिम्स बनाने की कोशिश करें, विच इज डिजायर, इंटेंशन एंड परसेप्शन. तो डिजायर अलग चीज है. डिजायर विश है, कामना, नॉट धारणा. फॉर I understand. हाँ. तो मुझे लगता है कि इन द फ्रेमवर्क एंड द डेफिनेशन एज पर अष्टांग योगा, धारणा इज ओनली द थर्ड लास्ट स्टेप बिफोर ध्यान, फॉर एग्जाम्पल. तो वो धारणा
इस चीज में उतरने के लिए कि अब मुझे ध्यान और समाधि की तरफ जाना है, which means only and only spiritual objectives and milestones in mind, Yes. which could be either through कर्म योगा, धर्म, राज योगा, वो विचार जो होते हैं, राज योग, कर्म Yeah, योग, I got it. हाँ, ठीक है. ज्ञान योग. तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज व्हाट धारणा मीन्स कि एक आदमी अपना एक मन बना ले कि अब मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है, एंड इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू एनी मटेरियल डिजायर. Okay. सो Okay. इसलिए मैं कह रहा था कि अगर मैं मैनिफेस्टेशन की बात आज करता, हाउ टू क्रिएट मैनिफेस्टेशन थ्रू मिरेकल टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, तो वो मेरे ख्याल में मैंने धारणा को उसमें इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया कभी शायद. Okay. ठीक है? I got Yeah, your point. that would have made about 4%, 5% of the overall ingredient of my entire understanding how to create miracles. वो 3 अलग स्टेप है. तो धारणा इज ओके, एक बार आ गई, सोच लिया कि अब ज्ञान योग करना है या लाइफ में स्पिरिचुअली नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाना है. सो आई होप आई कुड एक्सप्लेन. Yeah, it's perfect. तो आप इंटेंशन लेके चलिए, थॉट है, इंटेंशन है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, ऑल दैट इज धारणा, विच इज परफेक्टली फाइन. जैसे आपने कहा क्या धारण किया हुआ है, तो मैंने क्या धारण किया हुआ है, उसमें तो मेरी ईगो भी आ गई, पर्सनालिटी भी आ गई, पर्सनालिटी ट्रेट्स भी आ गए, सब कुछ आ गया. ये सब मैंने धारण किया हुआ है ना? हाँ, So all the 5 bodies are basically a dharan that I have taken on. The Atma soul has taken on all these 5 bodies. हाँ. तो अगर वो मैं भी कोई धारणा है, डिजायर, हाँ, पर वो धारणा नहीं बोलते, वो धारण किया हुआ है. मैंने शरीर धारण किया है, मैंने मनोमय कोश धारण किया है, मैंने आनंदमय कोश धारण किया हुआ है. You to understand it that way. So Yeah, ये मैं what ऐसे I'm ही सोचता carrying with me, what I'm carrying with me is dharan. That is different issue. वो अलग है. पर धारणा is basically you can say intention, focus और concentration, which is perfectly fine. हाँ. कोई इशू नहीं है ना? बट आप ये जो बोल रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी है और ये मटेरियलिस्टिक नहीं है, तो मेरा पॉइंट सिर्फ वहां पे है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड आर नॉट डिफरेंट. इट इज एग्जैक्टली द सेम. जैसे प्रत्याहार की बात करते हैं, इससे 2 स्टेप्स पहले था हमारा प्रत्याहार, चीजों को त्यागना है, अननेसेसरी चीजों को नहीं, इस्तेमाल त्यागना नहीं है, माइंड को इनवर्ड लेके जाना है. सॉरी, वो क्या था, फॉर आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट हिंदी नेम फॉर नियम, नो, क्या था, यम है, नियम है, अपरिग्रह बोल रहे हो आप. अपरिग्रह फॉर एग्जांपल. सो व्हिच इज नॉन अपरिग्रह इज नॉन एक्यूमुलेशन. हाँ, जो मेरे को चीज नहीं चाहिए वो मैंने एक्यूमुलेट कर रखा है, तो आई लेट इट गो. तो लेट गो इज अपरिग्रह, दैट्स अ डिफरेंट इशू. वो अलग टॉपिक है ना? हम बात कर रहे हैं. हाँ बताइए क्या बोल रहे मुझे हैं. लगता है कि अपरिग्रह एक तीसरी या चौथी सीढ़ी थी, फिर हम 5वीं पे आए, फिर हम ये 6ठी पे आ गए फाइनली, बिकॉज इसके बाद 2 आए, राइट? तो 6ठी में आए, तो इसका मतलब ये कि हम अपरिग्रह से ऊपर निकल चुके हैं, जिसमें हम डिजायर्स का भी अगर हम देखें तो बहुत ही मीनिंगफुल डिजायर्स रह गई हैं, और डिजायर्स आर ओनली टुवर्ड्स लेस स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, व्हिच आई थिंक considering that way, even that is not a problem. Amit ji, even that is not a problem, because what we are doing, the next step is only between you and God. हाँ, उसके बीच के जो भी चीजें हैं उन सबको हम हटा रहे हैं धारणा में. अगली स्टेज में तो ध्यान ही है ना, आत्मा और परमात्मा ही रह गए हैं. तब संसार से अलग होके, आप अलग होके मीन्स नाउ यू आर फुलफिल्ड ऑल योर डिजायर्स, यू आर फ्री फ्रॉम योर डिजायर्स, नाउ यू कैन लुक एट डिवाइन. वरना डिवाइन दिखेगा नहीं ना. इट्स लाइक सेइंग you want to see the sun in the sky and there is a cloud in between. What do? First you have to manifest that the cloud goes, right? आप आसमान में सूरज को देख रहे हो, बीच में एक बहुत बड़ा क्लाउड आ गया है, ये धारणा की स्टेज है. हमने उस क्लाउड को मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में ले आए. अब कौन बचा? अब आप और सूरज बच गए, आत्मा और परमात्मा. दैट इज ध्यान. अंडरस्टैंड? एंड देन व्हेन यू बिकम वन विद द होल यूनिवर्स, और अब फिजिकली तो आप नहीं विजुअलाइज कर पाओगे, बट देन व्हेन यू बिकम वन विद द सन, दैट इज समाधि. इतना ही तो बोल रहा हूँ मैं. तो कहीं गलत नहीं है जो आप बोल रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, है ना? तो आप बोल रहे हो कि मेटेरियलिस्टिक गोल नहीं होना चाहिए. मैंने कहा मेटेरियलिस्टिक गोल हो या जो मर्जी गोल हो, बीच में कुछ है, उसको हटाना है. दैट इज धारणा इज ओवर. नाउ यू आर कमिंग टू ध्यान, which we will talk in the next session. Sure. ठीक है. एक साधक की स्पिरिचुअल यात्रा में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो क्या है? वर्ल्ड ही तो है, अटैचमेंट ही तो है. ये संसार जो रियल लग रहा है, जो रियल नहीं है पर रियल लग रहा है, यही तो माया है. उसी के साथ तो अटैच हो गए हैं. तो उसके साथ अपने डिजायर्स को पूरे करते हुए नॉन अटैचमेंट में आगे बढ़ना ही धारणा है. नॉन अटैचमेंट. तो नॉन अटैचमेंट एंड नो एक्सपेक्टेशन.
then you are free from the desire. My point is nothing wrong with the desire, nothing wrong with the passion. Only thing is shift that desire and passion towards God. पर पहले जो डिजायर्स हैं वो पूरी तो कर लो. डिजायर्स आधी छोड़ोगे तो वहां पे जाके नहीं होगा. ध्यान के लेवल पे नहीं आगे बढ़ोगे, समाधि के स्टेज पे तो नहीं पहुंचोगे. इसलिए पहले अपने ये जो डिजायर्स हैं इनको साइड ट्रैक करके हटाना जरूरी है. यू नीड टू हैव फ्रीडम फ्रॉम योर डिजायर्स. यू डोंट हैव टू starve yourself of the desires, fulfill the desires, be free from them. Pravritti, nivritti. This is what is called in the Shastras. Shastron mein kaha gaya pravritti aur nivritti. Okay? So that is the freedom. We can have more discussion one-to-one if you have some clarity. Correct? All right, let's acknowledge everybody who shared. And we have reached 10 minutes over time. Anybody else who wants to share? Otherwise, we close the session for today. Anybody? Yes, Sapurva ji, go ahead. सॉरी सर, मैं थोड़ा और टाइम लेना चाहता था. मैं बीच में गूगल करके देख रहा था धारणा का जो ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में, विच इज परसेप्शन. तो धारणा इज अ स्टेज वेयर यू लुक एट योर परसेप्शन एंड ओवरकम परसेप्शन सो दैट यू मूव टू नेक्स्ट स्टेज विच इज ध्यान. परफेक्ट. मैंने कहा धारणा मीन्स आप परसेप्शन ले लो, इंटेंशन ले लो, डिजायर ले लो, जो मर्जी ले लो, पर उसको हटाना है, उसको आउटग्रो करना है. एब्सोल्युटली. तो नॉन अटैचमेंट एंड नो एक्सपेक्टेशन के साथ ही आउटग्रो करो. इसलिए मैंने जो भी आपको लगता है कि धारणा है, टेक दैट, बट अल्टीमेटली यू हैव टू गिव इट अवे. आप जो भी उसको डिस्टिंग्विश करते हो, धारणा ये है, वो डिस्टिंग्विश कर लीजिए, पर उसको छोड़ना ही है, तभी ध्यान में जाओगे. तो आपके और सूरज के बीच में अगर क्लाउड है तो उस क्लाउड को आप जो मर्जी नाम दे दो, पर उस क्लाउड को हटाना ही है, वरना आगे नहीं जाओगे. दैट इज द ओनली पॉइंट. इसीलिए आई वाज वेरी लीनिएंट इन व्हाटएवर यू सेड कि इंटेंशन, हाँ ठीक है इंटेंशन ले लो, परसेप्शन, हाँ परसेप्शन ले लो, जो मर्जी लेना है ले लो उसे, बट अल्टीमेटली यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम दैट. एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग फ्री फ्रॉम दैट, यू विल मूव टुवर्ड्स ध्यान. यस, एवरीबॉडी क्लियर ऑन दैट? All right, very good. Let's acknowledge everybody who shared, and I hope this session was valuable to everybody. So thank you very much for your participation. We meet again next week with the 7th step, which is Dhyan, and which is the most important, and everybody wants to reach there as the first step. Now, सबसे पहले ध्यान में ही जाना चाह रहे हैं, तो वो हम अगली बार बात करेंगे ध्यान का right process क्या है. There are different ways of Dhyan that we will discuss. Yes, and till then, think more about the spiritual retreat on 17th May, those who are in Delhi NCR, and we will have a lot of opportunities to interact, and it will be a wonderful session. And coming back from there, we will also have a online Vedanta, advanced Vedanta wisdom program. So these are the things that are in the pipeline, and we will have a lot of fun there and a lot of creation. So with this, we come to the end of the session. Thank you very much. Enjoy, take care, good night. Aham Brahmasmi. Thank you, sir. Thank you.